basically what is ecosystem, what are different factors, basically स्ट्रक्चर क्या होता है इकोसिस्टम का. सो इफ यू ऑल रिमेंबर कि टिपिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से रिएक्शंस और वी कैन से इंटरैक्शंस होते हैं, और to be more precise what all are processes which actually happens in a particular ecosystem. So there are 4 important processes if you remember कि जो कोई भी इकोसिस्टम में होते हैं. इट इंक्लूड्स प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी ट्रांसफर and what else? There are 4 important processes which we had discussed last lecture: productivity, decomposition, energy flow, and nutrient cycling. yes, so it was nutrient cycling, right? So these are the 4 important steps. After that, there are so many important things. हमने देखा था कि okay, there are different types of ecosystem. Natural हो सकता है, artificial हो सकता है, and all. Okay, and then मैंने example लिया था about the small pond, about how a particular pond shows different biotic and abiotic factors, and how exactly they all interact with each other basically. Okay, and exactly मतलब कैसे कौन production करता है, कौन energy transfer करता है, all these things. So it was just one example, and then we decided कि okay, next lecture में हम लोग start करेंगे about the ecological succession, right? So मैंने एक छोटा सा brief दिया था what is ecological succession. I hope सब लोग को थोड़ा बहुत तो याद होगा. So now we will continue from the point of ecological succession. Okay, so we all know what is ecosystem, जहाँ पे बहुत सारे abiotic and biotic factors एक साथ और कंपोनेंट एक साथ interact करते हैं. So it includes sunlight, heat, water like abiotic with a abiotic factor. And biotic factor में क्या क्या आता है? It can be any living being. It can includes insects or protozoans or any higher level animals. Okay, so all of these are actually staying together in a particular habitat, and they are forming a typical ecosystem, we can see, right? So this ecosystem shows a particular kind of succession, or we can say a small level of like development with time. It's not like कि जहाँ जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं, let's say a particular pond or let's say a forest, it's not like कि वो forest वहाँ पे compulsory मतलब it's like it's there from a long time. Yes, it is there from long time, but वो जब से अर्थ बना है, let's say from the big bang theory, it is not like कि तब से वो forest वहाँ पे forest बन के है. No, it is with the time जब वो फॉरेस्ट डेवलप हुआ होगा, राइट? इट इज नॉट लाइक कि वो वैसे ही किसी ने बोला कि अरे वाह यहाँ पे फॉरेस्ट बन जाए और फॉरेस्ट बन जाए. नॉट लाइक दैट, राइट? इट टेक्स टाइम to develop or to form a particular ecosystem, and time is that's why one of the important crucial factor we can say which is playing a major role in this particular ecological succession. तो अगर कोई भी इकोसिस्टम हमें फॉर्म करना है तो इफ यू ऑल रिमेम्बर मैंने बोला था कि देयर आर सम पायोनियर स्पीसीज. पायोनियर स्पीसीज मतलब जो सबसे पहले आते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया, जिनकी वजह से फिर बाकी सब मतलब दे विल कम, दे विल एस्टैब्लिश फर्स्ट, उसके बाद कोई और स्पीसीज आएंगे, उसके बाद कुछ और स्पीसीज आएंगे, एंड देन दे विल स्टे टुगेदर एंड दे विल फॉर्म इकोसिस्टम. बट जो स्पीसीज जो सबसे पहले आया था दैट विल बी कॉल्ड एज अ pioneer species. So we will be seeing few examples also कि क्या क्या हो सकते हैं pioneer species. Okay, but then एक बार pioneer species आ गया तो जैसे टाइम जाएगा और species आएंगे, you can see there will be differences and varieties in the different species जो वो particular area में रहेंगे, and this will make the ecosystem a bit complex kind of ecosystem. It will not be just now pioneered wala, it will be a complex, and that will be called as a that is called as a climax community. तो पायोनियर इज सबसे प्रिमिटिव स्टेज भी कैन से जहाँ पे सिर्फ एक ही फिक्स होता है, एंड क्लाइमैक्स इज बेसिकली स्टेबल काइंड ऑफ स्टेज ऑफ इकोसिस्टम जिसके आगे वो अभी बढ़ेगा नहीं. दैट इज क्लाइमैक्स मतलब अभी सब कुछ ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल हम लोग कुछ तो इंटरफेरेंस दे रहे हैं
maybe naturally, maybe artificially, there will be no change further in a climax community, okay, or a climax stage of a ecosystem. So if you can see the diagram below, so these are some stages. So you can see the very first जो दिखा है one, that is there is nothing. You can say it is just some bare area or some rocky area जहाँ पे पहले कुछ नहीं था. Okay, then some let's say some pioneer species आ गए हैं. So let's say pioneer species can be any lower organisms like bacteria or fungus. So let's say we can say okay, lichens are the pioneer species. So lichens are गए in a second stage में. So in a third stage we all know lichens का function क्या है? Lichens are actually involved in a soil formation and a weathering, right? वो लोग rocks को degrade करके soil बनाते हैं. So you can see in a third layer you can see a ब्राउन लेयर यहाँ पे मतलब यहाँ पे सॉइल डेवलपमेंट हो गया है. तो एक बार जब कोई भी एरिया में सॉइल आ जाता है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है which are actually required for plant growth, then you can see the plants will start growth. So from the stage 4 you can see some small plants are growing from just a minute. Yeah, so from the stage 5 you can see there are some higher plants, just stage 6 more evolved plant, then a typical you can say a next stage जहाँ पे और बड़े बड़े plants grow रहे हैं. Finally the stage 8 you can say it is a climax community or climax stage, okay, जहाँ पे now almost a stable ecosystem is formed. So I hope you understand from the level 1. So level 1 to level 8 ये जो stages थे 1 2 3 4 एक के बाद एक जो changes आ रहे हैं with time in a ecosystem is called as a ecological succession. I hope you understand what I am saying. तो जो changes आ रहे हैं in a particular ecosystem with time with respect to its a particular species composition or let's say typical environment, it's called as ecological succession. So that's what definition says then. The gradual and the predictable change in the species composition of a given area is called as a ecological succession. And ये changes कैसे होते हैं? We had just seen ये sequence. It is a series of different events. So it is a sequential and a environmentally regulated events जो कि हो रहे हैं in a ecological succession. बट ये जो हम लोग देख रहे हैं इट्स नॉट लाइक इट्स एज सिंपल एज कि ओके मतलब टाइम ले रहा है दैट्स फाइन, इट विल टेक लेट्स से बहुत सारा इयर्स, बट देन इट्स नॉट दैट इजी कि एक स्टेज में खत्म होने वाला प्रोसेस. देयर आर नंबर ऑफ steps or we can say number of process are involved in this particular ecological succession. Okay, so we can divide this particular process जो involved into 7 major steps. You can say sometimes they also call it like 5 to 6 stage, but then it depends. So depending on हम लोग कहाँ पे ecosystem develop कर रहे हैं, what type of ecosystem it is, this stages will show some kind of variation. Okay, थोड़ा बहुत difference आ सकता है. It's not like कि सबके सब होने जरूरी ही है, but then these are some integral we can say or some important steps involved in a particular ecological succession. तो सबसे पहला है nudation, then invasion, then excesses, then aggregation, competition and coaction, reaction and stabilization. So I will just tell you first two things first now. Nudation मतलब formation of the bare area. So if you see in this particular image जो सबसे पहला stage है, कुछ भी नहीं है, just one rock you can say or some bare area, वो बनाना is also a kind of state and it is called as nudation. और last stage is like stabilization. इसका मतलब है कि अभी एक stable climax similitude वहाँ पे बन गया है. Okay, so now if I want to explain you each of these one by one. So we all know succession में हम लोग क्या देखना चाहते हैं? We are trying to find out the changes which are happening in a species composition in a particular area, right? Or like how a particular community is increasing its complexity और कैसे वो लोग how they are growing and flourishing in a particular area, right? हम लोग को वही देखना है. So it includes nudation, as I mentioned. It begins with the development of a bare site. Bare site मतलब सबसे primitive part.
अगर मेरे पास जगह रहेगा तभी तो मैं आगे जाके बनाऊंगा। तो इट इज दिस पर्टिकुलर एरिया, उसको जो हम लोग बोलेंगे बेयर एरिया, उसको बनाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूडेशन। ओके, देन कम्स माइग्रेशन और लेट्स से इन्वेजन। ओके, तो यहाँ पे different components, so they have called the propagules here. So different components, actually different species will actually come and invade in a particular area, so that's why it is called as invasion or a migration. Okay, so when I say propagules, what does it like basically mean? So when we talk in terms of plants, so we use this term propagule. So it can be different like small uh, parts of the plant. So you can say plant birds and all, or spores and all, which can be developed into the entire plant when they get a favorable conditions, like that structures. Okay, so that those structures we call as the propagules. Then the third process is the excesses. Okay, so यहाँ पे it's like it is the initial like establishment of vegetation we can say. So जो plant के propagules अभी आ गए हैं वो area में, now they will start growing and flourishing, right? They will establish themselves in that particular area so that a proper vegetation form होगा. What do you mean by vegetation? Development of different plants and all in a that particular area. तो अभी जैसे ही प्लांट्स आ रहे हैं वहां पे ग्रो हो रहा है सब कुछ, डेफिनेटली देयर विल बी हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, राइट? बिकॉज इवन द प्लांट्स दे compete with each other. How? Because they also require space to grow, they require light and nutrients, right? So they will compete with different species and they will try to establish themselves in that particular area. Okay, now then this will further lead to the reaction. Okay, so there will be some effect, there will be some process in because of which this there will be formation of the humus. Now what is humus? Humus is like, you can say, it is a component which is generally present in soil and mainly composed of organic matter. So most of the time जब कोई भी डिग्रेडेशन वगैरह process होता है, the things which are obtained from such processes is called as humus. Okay, so it is also very good for a plants to grow. Okay, so sometime now because of this let's say humus also, there will be some kind of competition, some kind of reaction, interaction will be happening between the two plant species. So जिसको मिल रहा है let's say वो अच्छे से grow होगा, flourish होगा, जिसको नहीं मिल रहा है it will not be able to grow. Okay, so that is called as reaction, and finally they will manage somehow to stay with together and they will stabilize in that particular area and will form a complex, or we can say complex climax community. A stable form of community they will form in a particular area. So these are different steps in a particular uh, ecological success.
हेलो, सॉरी फॉर दैट सम नेटवर्क इश्यूज, बट देन आई थिंक यहाँ तक सबने सब कुछ सुना, राइट? या फिर शुड आई रिपीट इट? हेलो, so सबने देख सुना था about the stages involved in the ecological succession, right? Yes. Okay, so now so मैं बोल रहा था कि okay ये सब stages के जहाँ हो रहा है, all we are now understood. So now what's next? That ये जो ecological succession है, that can be of two major types. Okay, so it includes primary succession और सेकेंडरी सक्सेशन. सो इन दिस चैप्टर अभी जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वहां पे हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे दैट इज व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन एंड व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन. ओके, सो बिफोर दैट जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जैक्टली हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग्स लाइक आर कॉल्ड है बेसिकली. तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ओके ड्यूरिंग सक्सेशन अ पर्टिकुलर स्पीशीज आ जाएगा, दे विल एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर area and then they will flourish. Okay, and that's how they will then form a complex community further, right? In the due process, in this particular process sometimes ऐसा भी होता है कि कोई species अपने आप like they will disappear because they will not be able to adapt to the particular environment, and that's why they will disappear from the particular area. Okay, but then mainly we know there will be increase in the complexity. Okay, सो जैसे कि हम लोग को पता है कि अ पर्टिकुलर इट इज अ सिक्वेंशियल इवेंट कि सबसे पहले देयर विल बेयर एरिया, देन एक पर्टिकुलर पायोनियर स्पीशीज आएगा, देन डिफरेंट स्पीशीज विल कम. सो दिस इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, राइट? सो दिस एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज that is actually changing a particular area successively, like we can say it is showing us some kind of succession. This actually constitute a seer. Okay, SERE, seer. And it is actually shows us a kind of uh, information about, like it is giving us information about कि from pioneer stage to climax stage क्या क्या changes हुए हैं और क्या क्या changes देखे गए हैं in a particular ecosystem. Okay, and ये जो individual changes है, like individual transfer from like say pioneer stage to the next stage to the again the particular more developed stage, these are called as a serial communities. So जो individual communities जो आ रहे हैं वहाँ पे, that is actually called as a serial community. So one thing you need to keep in mind, the entire sequence of communities जो actually आ रहा है particular areas में, that जिसको हम लोग बोलते हैं seer, and the individual one is called as a serial community. And in this entire process, there is a change in a diversity of a species in a particular stage. There is an increase or a decrease in number. Let's say more precisely, it will be increase only. But sometimes some species may decline also. And obviously, अगर उनका number बढ़ रहा है, so there will be increase in the total biomass of a particular ecosystem. Okay. So now that is what, just for your information, what is seer and what is serial community. So as I mentioned now we will start with the primary and the secondary succession. Okay. So this is a basic primary succession. Okay. So why it is called as primary? I think I will सबको समझेंगे what is succession, right? What is primary now? तो इसको primary क्यों बोलते हैं? Because it is a succession which has actually started where there is no living organisms were present before. मतलब ऐसे जगह पे सक्सेशन चालू करने का, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन करने का और इकोसिस्टम डेवलप करने का जहाँ पे उससे पहले कुछ नहीं था. इट कैन बी अ बेयर एरिया, इट कैन बी सम बोलते ना ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी एनिमल या फिर कोई भी प्लांट पहले सर्वाइव नहीं कर रहा. इट इज जस्ट अ बेयर एरिया, देयर इज नथिंग बिफोर, देयर वाज नथिंग बिफोर. और ऐसी जगह पे ना हम लोग को ecosystem establish करना है, and that is called as a primary ecosystem or primary succession. Okay, so it can be anything like a newly formed pond or the volcanic islands or like a cold lava or
एनी वाटर रिजर्वर और एनी रॉक काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे पहले कुछ नहीं था, ठीक है, ऐसी जगह पे प्राइमरी सक्सेशन हो सकता है. ओके, एंड this is very slow process as compared to any other succession. Primary succession is very slow process. Now what? So very first example अगर देना चाहूँगा about primary succession, so the development of the earth itself is a kind of primary succession we can say. So after Big Bang theory जो हुआ था billions of years ago, the earth was not having a single species, right? तुम लोगों ने obviously ये पढ़ा रहेगा in your evolution chapter, राइट. तो सबसे पहले क्या बना था ऑन अर्थ? एनीवन कैन टेल मी, सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट बना था ऑन अर्थ? मीथेन, हाइड्रोजन. या बट दोस आर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिक और वी कैन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बना था? नाइट्रोजन. सॉरी मेरे को सुना नहीं. या क्या होता, प्लीज रिपीट. नाइट्रोजन है क्या? नहीं, नाइट्रोजन आल्सो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. CHO, CH4, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तो गैसियस फॉर्म में थे, सो ऑब्वियसली वो तो वहां पे थे ही. इट इज अ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. आई एम आस्किंग सबसे पहला लाइफ का फर्स्ट ओरिजिन का, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ इन ऑन अर्थ बेसिकली. सबसे पहला कौन सा कंपोनेंट जो था वो लाइक जिसका न्यूक्लिक एसिड. यस. सो इनिशियली देयर वाज दिस पर्टिकुलर फाइट कि प्रोटीन इज द सबसे पहला कंपोनेंट जो फॉर्म हो गया था, एंड फ्रॉम द प्रोटीन देन smallest organisms were developed and then the evolution started. Then few people have, so basically protein generally हम लोग consider करते हैं as the first biomolecule जो बना था because of the interaction between this particular inorganic components. But then now so few people are claiming that protein cannot be the first biomolecule. Can you all tell me why people are saying कि protein cannot be a first biomolecule जो बन सकता है आपसे? There is a good conflict, like there is actually fight between the scientific communities. कोई बोलता है कि protein is the first molecule, कोई बोलता है कि नहीं, protein नहीं, nucleic acid is the first molecule. और nucleic acid में भी मैं बोलूँगा कि RNA, जैसे कि RNA is the first molecule जो अर्थ पे बना था, not DNA, RNA. So can anyone tell me why is it fight? Why they are actually fighting? क्यों उनको fight करना है? What is the logic behind the fight? अगर या anyone? सर मतलब नहीं समझा आप क्या बोलना चाहते. ओके, सो हम लोग बोल रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या था, मतलब कैसे पृथ्वी पे सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट था, लिविंग कंपोनेंट था कि जो जिसकी वजह से लाइफ डेवलप हो, राइट. कुछ ना कुछ तो बना रहेगा ना. इट्स नॉट लाइक कंप्लीटली एनिमल बन गया, नो. इट इज लाइक अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट जिसका इवोल्यूशन होते 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 दे अ डिफरेंट हायर ऑर्गेनिज्म बन गए. लेट्स से सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स बने, बायोमोलिक्यूल्स को आगे लेके सब प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोट से लेके आगे जाके यूकैरियोटिक सेल्स, ये सब अग्री करते हैं. टाइम में तुम लोग का इवोल्यूशन चैप्टर हुआ, तुम लोग का हुआ है ना वो चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ लाइक व्हाटएवर ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन और जो भी नाम रहेगा अभी. यस सर, हो गया. सो उसमें यू मस्ट हैव स्टडीड वन थिंग कि ये सबसे पहले क्या बना था, हाउ द लाइफ हैड स्टार्टेड. सो वहां पे एक पॉइंट रहेगा कि प्रोटीन वाज द फर्स्ट एलिमेंट जो कि बना था ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ लाइक डिफरेंट इंटरेक्शन. तो जब इसने बोला कि ओके देयर इज अमोनिया, देयर इज नाइट्रोजन, देयर इज कार्बन, ऑक्सीजन, व्हाट और डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर. तो इनके वजह से डीप सी में कहीं पे तो सबसे पहले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बने थे, ऐसा उन लोग का फर्स्ट कहना था. सो दैट इज बेसिकली ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम देयर. तो फिर ये प्रोटीन्स आगे जाके दे फॉर्म अ टिपिकल सेल एंड देन सेल आगे जाके दे फॉर्म अ प्रोकैरियोटिक सेल, देन यूकैरियोटिक सेल एंड देन ब्ला 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 ब्ला. सो आई डोंट वांट टू गो इन इवोल्यूशन. What I want to say कि that's what the basic point, क्योंकि protein is the first thing or we can say a very basic origin of a living life because protein forms a integral part of the all living system. Okay, वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, प्रोटीन तो होना ही है, राइट. तो नाउ आई एम सेइंग कि जैसे कि तुमने बोला कि न्यूक्लिक एसिड कैन बी द फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, राइट. तो मैंने बोला कि यार इवन दैट इज करेक्ट,
बट मैं एट द सेम टाइम बोल रहा हूँ कि प्रोटीन है करके, एंड मैं तुम्हें भी हाँ बोल रहा हूँ। और उसके बाद मैंने बोला कि या बिकॉज देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन इन अ साइंटिफिक कम्युनिटी कि प्रोटीन को हम लोग फर्स्ट बायोमोलिक्यूल समझे या न्यूक्लिक एसिड को हम लोग फर्स्ट बायोमोलिक्यूल समझे। जहाँ तक सब समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाँ कन्वे। सर, समझा। हाँ, so now I am asking you कि ये डिबेट क्यों हो रहा है? Why the scientists are fighting कि प्रोटीन को फर्स्ट मॉलिक्यूल समझे या RNA को? तो when you say nucleic acid, I am saying more precisely RNA. In nucleic acid, there are two types, DNA and RNA. I am not taking DNA into consideration now. I am just saying कि people are fighting. Some are saying कि RNA is the first biomolecule. Some are saying DNA is the first biomolecule. So tell me, what do you think? ये डिबेट क्यों हो रहा है? क्यों लोग को झगड़ा करना है इस बात पे? What is the logic behind this fight? सर क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी हमें दिखता है लाइक हेयर कलर वो सब प्रोटीन के वजह से होता है। तो शायद वो फिर बाद में डिस्कवरी के बाद पता चला कि ट्रांसलोकेशन होता है जिससे डीएनए से प्रोटीन्स बनता है बीच में आने से। Yes. So you're on right track, I can say. So the study जो किया गया था, so even now there is a conflict. Okay, so even now people are fighting. Still many textbooks says that कि protein is the first component biomolecule जो develop हुआ था. But then still scientists are fighting, and then because जैसे कि तुमने अभी बोला the same thing even they are saying. तो तब at that time हम लोग को ट्रांसक्रिप्शन पता नहीं था। अभी now we are well studied and we know that कि हर एक जो प्रोटीन है वो एक्चुअली कहाँ से आता है? वो आता है आरएनए से। तो ऐसे डायरेक्टली प्रोटीन कैसे बना? दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग, राइट? So they are saying कि that's why RNA must be the first thing to form on Earth, and from which the DNA would have formed. ऐसे उन लोग का कहना है, but this is more of debatable question. Okay, so I will go in detail. So what I was saying basically, तो जब ये बिग बैंग थ्योरी हुआ था बिलियंस ऑफ इयर्स एगो, तो आई होप सबको याद है, थोड़ा बहुत तो याद होगा अपना चैप्टर वो, कि देयर वाज नो लाइफ एट दैट टाइम। सब कुछ बोलते ना विध्वंस टाइप हो गया था। देयर वाज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड ऑल, सब इन्वायरमेंटल कंडीशंस वर नॉट फेवरेबल एट दैट टाइम। सो क्या हो रहा था? नो लाइफ, नथिंग। धीरे धीरे जैसे टाइम गया, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, lot of years to actually cool down the earth. जब वो cool down हुआ उसके बाद then water formation and all these things started happening, and उसके बाद then some kind of living life was started. सब लोग agree करते हैं ये point पे, या anyone has this point कि नहीं life was there from the before the big bang theory also? ऐसा किसी को कुछ बोलना है? और you all agree कि okay big bang theory के बाद ये सब होना चालू हो गया? So considering that you all are accepting the fact, तो ये जो बिग बैंग फिर हुआ था, लेट्स इमेजिन कि उससे पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, एंड दिस इज कॉल्ड एज देन प्राइमरी सक्सेशन। तो कुछ नहीं था, वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया, एंड देन इट्स एक्चुअली स्टार्टेड द काइंड ऑफ ecological succession, we can say. Okay, but then the primary succession is not a very fast process. Why? Because if you just see the stages involved in the primary succession in this particular diagram, if you say, तो सबसे पहले से bear rock was there, then सबसे पहले some pioneers फिर आएंगे, it can include the lichens and some mosses and all, bryophyte like things. Then they will again decompose, they will do some activity and they will form a soil. Okay, so there will be a top layer of soil, you can see, and as जैसे soil बनेगा which is having some good factors, obviously plants will be, it will be the good environment for the plants to grow, right? तो जैसे soil बनेगा, some kind of grasses will start growing, they will displace now the pioneer species. उनका अभी काम हो चुका है, तो they will not be present in that abundance. Obviously they will be present there but not in that abundance. अभी उन्होंने अपना काम कर दिया, अभी new species will come and colonize over there, right? फिर उसके बाद जैसे ग्रासेस बनेंगे, now जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स बढ़ेगा और the soil becomes more we can say fertile kind of thing, so there will be more types of plants. Now shrubs will start going and it will form more compounds, and finally the जैसे soil का limit बढ़ेगा, उसका layer बढ़ेगा, it will form a very good level of trees, like
high level trees basically. So grass, then shrubs, and then finally a typical tree will form in that particular area. ये जो entire stage है from bare rock to this particular thing is called as a primary succession. Okay. Why it is slow? Why I'm saying it is slow? Because ये जो process है ना, bare rock to the colonized by the pioneer to the decomposition and creation of a layer of a soil. The first three stages है ना, it takes a lot of time. It is not that easy to form a soil from a rock. और वो भी सोचो कि स्मॉल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक लाइकेंस एंड मॉसेस वो क्या उखाड़ लेंगे, राइट? इट्स नॉट लाइक अ वेरी फास्ट प्रोसेस. इट टेक्स देम इयर्स टू मेक दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. उसके बाद एक बार जब सॉइल बनेगा, देन द प्रोसेस विल लेट्स से टेक अप लाइक इट विल गियर अप, वो थोड़ा फास्ट जाएगा. बट ये जो स्टार्टिंग का 3 stages है आर अ वेरी स्लो प्रोसेसेस, एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम to form a soil, and because of that the primary succession is a very slow process. Okay, I hope you understood what is primary succession. कोई doubt होगा तो please ask me, we can discuss it again. Any doubt? Basically ये ऐसा succession है जो कहाँ पे होगा, where there was no living organism existing before. तो completely new area पे form होगा, and it will take a lot of time, and it is actually a sequential event जो एक particular sequence में होते जाएगी. Any doubt? Yes, any doubt? No, sir. Okay. I hope you are understanding what is I am saying basically, because it's not ऐसा कुछ random thing, but just you want to differentiate जो भी factors हम लोग discuss करें वैसे. तो जैसे कि ये बोला कि primary में क्या हो रहा था कि ऐसे जगह पे succession हो रहा था कि जहाँ पे there was no life before. But you must have heard the things like कि कहीं पे तो अभी ऑस्ट्रेलिया में, yeah, the best example I think ऑस्ट्रेलिया का अभी that forest was that there was a forest fire I think in a month of March or somewhere, and बहुत 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 बड़ा environmental loss हुआ था in Australia. I hope सब लोगों ने न्यूज़ तो देखा ही रहेगा. Like it was very painful thing the way the animals were dying and the plants were completely like there is no life we can say. The people were trying to save the animals and all. It was like very heartbreaking thing कि ऐसा मतलब बहुत बुरा situation था वहाँ पे. So it was, if you have seen, it was a well established forest in Australia. और वहाँ पे आग लग गया, then बारिश हुई, and whatever thing happened. Okay, so I don't want to go and discuss that particular incident now. But what I want to convey, आग लग गया to the forest. Forest is what? Ecosystem. मतलब बना बनाया ecosystem जो था, अब वो जल के खाक हो गया. There is now no life further. ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, right? But does it mean that there will be no life further? अभी जो forest था ऑस्ट्रेलिया का जो जल गया था, is it still like the like in a completely destroyed area form, या फिर उसने वापस से अभी एक नया रूप लेना चालू किया? It is started regrowing and they are actually taking efforts to grow it again, right? So what do you think? वो अभी भी ऐसे जला हुआ state पे there is no life now, or now it is like recovering from that state and it is actually growing and growing and growing? What do you think? क्या possibility है अभी यहाँ पे? क्या होगा? Recovering and growing. Yeah, right. So this is called as secondary succession. So यहाँ पे actually it is like कभी-कभी because of the forest, because of the fire, because of some floods, because of some earthquakes and all these kind of situations, let's say natural calamities or some kind of like forest farms and all, sorry, farmlands and all, because of which कोई area पे जो प्राइमरी कम्युनिटी था और लेट्स से द प्राइमरी इकोसिस्टम था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड इट स्टार्ट टू फॉर्म अ न्यू ecosystem right now again. Okay, and this is called as a secondary succession. So actually it will begin in the area where natural biotic communities have been destroyed. Okay, मतलब जो पहले था उसको destroy किया गया है. It can be because of the abundant farmlands or let's say burn or cut forest. हम लोग cutting भी करते हैं, even that will cause a problem. Burning ये तो है ही है, and then floods and all like thing. So ऐसे एरिया में होगा secondary succession.
Now it is a very faster process than a primary succession. प्रोसीजर सेम, ओके, उसका जो स्टेजेस है वो सेम ही रहेगा. तो पहले बेयर एरिया रहेगा, देन अगेन सबसे पहले पायोनियर स्पीसीज, देन इंटरमीडिएट एंड देन फाइनली क्लाइमैक्स कम्युनिटी. सो टेल मी नाउ, व्हाई डू यू थिंक दैट द सेकेंडरी सक्सेशन विल बी फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन? क्यों ऐसा होगा? एनीवन? यहाँ पे प्लांट्स के रिमेनिंग पार्ट थोड़े बचे रहेंगे तो उनसे नए प्लांट को ग्रो होने में हेल्प हो जाएगी. Yes, that is absolutely correct point. And even the soil. तो अगर तुमने सुना रहेगा in a previous slide मैंने बोला था कि जो first to the third stage था, like the formation of the soil, that was the very longest process जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. But in this case अगर तुम लोग देखो, yes, आग लग गई है, बह के गया है बहुत कुछ टाइम, बट जो सॉइल रहेगा दैट विल बी देयर ओनली, राइट? द सॉइल मतलब ओके थोड़ा बहुत बह के भी जाएगा, बट it is not that stage वो completely bare land हो गया अभी. No, it is still having some kind of things in it which will actually favor the succession. Okay, and that's why वो जो time रहता है to formation of the soil top layer and all वो बच जाता है in case of the secondary succession, and that's why it is a faster process than the primary succession. So if you see this particular diagram, you can see यहाँ पे fire लग गया है. Now the area has become quite like there is nothing left but the soils and all, and some remaining part of the plants are there. Okay, now धीरे धीरे it will get decomposed, and then again the pioneer species will come. And you can see the time span also. So again अगर अगर कोई पर्टिकुलर जंगल को आग लग गई तो अब पर्टिकुलर जंगल को वापस से एस्टेब्लिश करने के लिए यू कैन सी द टाइमलाइन जो दिया है. तो लेट्स टेक ये टाइम एज 0 जब आग लगी थी, उसके बाद का टाइम एज 0. देन पायोनियर फोर्स आने के लिए 1 to 2 years. Then grasses and perennial plants will start growing 3 to 4 years. Then grasses, shrubs, pines, young oak and like बड़े बड़े plants basically उसके लिए 5 to 150 years. And then a mature typical forest बनाना. अभी उन्होंने example लिया है oak and hickory का. I won't go in that example, but then a normal process I'm saying it takes around 150 years to grow a particular proper established forest, which is a ecosystem. So you can see the time required for a particular ecosystem. That's why the natural processes are slow, but still it takes a time. अगर secondary succession के लिए इतना टाइम लग रहा है, then just imagine how much time will require for a primary succession, right? Because वो तो और ज़्यादा टाइम लेगा. तो it takes a lot of time for a particular primary succession. I hope you understand the difference between the primary and secondary. Primary में everything will start at a new place जहाँ पे life था ही नहीं पहले. And secondary में it will happen on the same place जहाँ पे पहले कोई life था और community था, which actually got destroyed by some or other reasons. Okay, primary is a slow process, secondary is a kind of fast process as compared to primary. So they can ask you to write down a differentiation between the primary and secondary succession. So these are the 2 points you should mention. So कोई भी succession हो, primary हो या secondary हो, there are few things like अगर हम लोग सक्सेशन देख रहे हैं तो देयर विल बी चेंज इन वेजिटेशन, दैट इज चेंज इन प्लांट पॉपुलेशन इन द पर्टिकुलर एरिया. अगर प्लांट का पॉपुलेशन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द फूड एंड शेल्टर फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट? एंड अगर वो अफेक्ट हो रहा है then it will ultimately affect the number and types of the animals and different decomposers जो कि वो एरिया में प्रेजेंट रहेगा. So you can see a single process is actually affecting a different level which are present in a ecosystem. Okay, so change in vegetation which affects the food and shelter, and finally it will also affect the number and types of the animals and decomposers जो कि वहाँ पे present होंगे, right? So but ये जो process है development of ecosystem or let's say ecological development, at any stage if there is some kind of natural or human induced disturbances, actually
it will actually convert a particular serial stage of a succession. तो एक तो वो उसको फटाफट आगे लेके जाएगा, it can take it to the next stage, और also it can take it to the previous stage. तो ऐसा भी हो सकता है. So disturbances sometimes they are helpful, sometimes they are not helpful. Okay, so but then disturbances are something which is actually important, playing important role in a ecological succession. Okay, so it was also why I'm saying कि sometimes फायदा समटाइम नुकसान, बिकॉज कभी ना अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो इट विल एक्चुअली फेवर अ पर्टिकुलर स्पीसीज टू ग्रो. ओके, लेट्स से बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो गया है. ओके, फ्लड होकर निकल गया, लाइक इट्स नॉट द दैट लेवल ऑफ फ्लड के पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए. नो, लाइक अ नॉर्मल काइंड ऑफ फ्लड जैसे कि होता है इन अ फॉरेस्ट. अभी वो चला गया है, तो नाउ दैट पर्टिकुलर थिंग मे फेवर अ पर्टिकुलर स्पीसीज टू ग्रो, बिकॉज बहुत ज्यादा मार्शी एरिया हो जाएगा, बहुत सारा ऐसे वाटर एरिया हो जाएगा वहां पे. So that will form a different environment which can favor a particular species. However, that same area जो बहुत ज़्यादा भी पानी वाला है, watery है, marshy है, that may also affect a particular species जो पहले से वहाँ पे present था, and now it is not able to cope up with this extra water conditions, and it will then disappear, and that's why get eliminated from the that particular area. So that's how the disturbances actually affect a particular species or a ecological succession. Clear? Understood? Yes? Yes, sir. Yes. Okay. So अभी तक हमने क्या देखा? Ecosystem क्या आते हैं? What is ecological succession? What are the steps involved in ecological succession? And what is a primary and secondary succession? Right. So now this was in general, and now we will discuss in like basically succession very specific to the plant. Okay, so succession in a plants is basically based on their habitat, कि वो लोग कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग उसको बोलते हैं typical plant succession is this kind of type or that kind of type. So based on a habitat, there are two major types of ecological succession in a plant. It is called as hydrarch, basically जो कि plant like जो कि succession हो रहा है in a water based habitat, and xerarch, which is basically succession which is happening in a dry area. Okay, so here hydrarch is also called as hydrosphere, and xerarch is also called as xerosphere. Okay, और हम लोग जब succession बोलते हैं तो what is actually happening in this particular area? So in case of hydrarch, the succession is actually from hydric condition to the basic condition. तो hydric condition is basically a water, कोई भी बहुत ज़्यादा वाटर वाला एरिया, उससे अ मोर स्टेबल एरिया, दैट इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जाने का वे. एंड जेरिक में भी बहुत सारा ड्राई एरिया, वो बेसिक कंडीशन, मतलब द वाटर बेसिकली द एरिया जहाँ पे मीडियम वाटर कंडीशन है, इट इज नॉट टू ड्राई और टू वेट फॉर अ पर्टिकुलर system. So it is basically a stable and system जहाँ पे different organisms can stay all together. Okay, so we can what we just check that there are two types of succession in a plant. It is called as hydrarch succession and xerarch succession. Hydrarch happens in a water, that's why hydrarch, and xerarch from a dry area. Okay, so now this is a typical xerarch succession of a plant. So as I mentioned, वो कहाँ पर start होगा? It will start from the dry area, जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था. So you can see this bare rocks. There is nothing now. धीरे धीरे यहाँ पे lichens आना चालू हो जाएगा. They will communate obviously there. They will colonize in a particular area. They will be the pioneer species. Okay. अभी लाइकेंस आ गया, मतलब लाइकेंस का एक्टिविटी क्या होता है? मोस्टली द क्रस्टोज लाइकेंस विल बी देयर. क्रस्टोज टाइप ऑफ लाइकेंस, आई होप तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा इन किंगडम प्लांटेरिया. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेंस, क्रस्टोज होता है, फॉलिएट रहता है एंड ऑल. सो क्रस्टोज लाइकेंस आर द एक्टिव लाइकेंस जो रॉक पे एंड द बे एरिया पे ग्रो हो सकते हैं, एंड दे आर मेनली इन्वॉल्व इन अ सॉइल फॉर्मेशन एंड अ विदरिंग ऑफ अ रॉक. ओके, तो अभी लाइकेंस आ गए तो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म अ सॉइल, एंड बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर सॉइल
some small annual plants will start growing in the particular area because उनको अभी एक base मिल रहा है, एक soil का layer मिल रहा है to grow. Okay. So धीरे-धीरे there will be some perennial herbs and then some grasses and all will start growing, and simultaneously there will be increase in the soil top layer. Okay, so you can see यहाँ पे बिल्कुल भी soil नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा soil layer दिख रहा है, start हो गया है, यहाँ पे भी this is a thin layer of a soil जो कि सिर्फ grasses के लिए जरा preferable है. Now you can see this particular layer is actually increasing, right? And how that's how धीरे-धीरे वो actually plants और community वहाँ पे change हो जाएगा. So you can see pioneer stage यहाँ तक था, then the intermediate stage जहाँ पे different grasses थे, shrubs थे, shaded intolerant trees है, and finally a very climax stable community form होगा, which includes very big trees, which we like call as shade tolerant trees. मतलब बहुत बड़ा एक perfect ecosystem will get formed. So this is different layers or we can different stages involved in a Zehraj succession of a plant. So I think this is not something different. ये already हमने अभी देखा है in a case of primary succession and all. तो तुम लोग को ये समझ में इतना difficult नहीं जाना चाहिए. Just understand the meaning of the word Zehraj. Zehraj मतलब dry area. कि जो सक्सेशन चालू हो रहा है फ्रॉम वेरी ड्राई एरिया, ऐसे बोलते हैं हम लोग Zehraj सक्सेशन, और वो एंड अप होता है in this particular climax community. Now the other type is basically, Hydrarch succession of a plant. तो ये चालू होता है in a particular water body. So you can see यहाँ पे पानी है, okay, it is, let's say this is a small pond. तो सबसे पहले वहां पे आएंगे phytoplanktons. Okay, the moment phytoplanktons will start growing, it will, there will be some more types of plants like submerged root submerged plants will start growing. For example, hydrilla. After that, there can be some more rooted floating angiosperm kind of things like a lotus will form, which will be then followed by the free floating plants like the pistia. Then there will be reed swamps, there will be marsh meadow stage, then finally a scrub and the final climax community. So you can see phytoplanktons, uske baad submerged plant swamps, marsh meadow. You just, this is the second stage, this is the third stage, this is the fourth. I don't want you to like memorize it or keep in mind, but what you need to understand कि वो differences क्या दिखा रहे हैं. So पहले only small planktons, then submerge and free floating, then reed swamp. What is reed swamp? So you can see this particular thing. So like kind of दलदल जैसा जगह, it's called a reed swamp. And marsh meadow मतलब जैसे मतलब you can see ये पानी है, but पानी के बीच में भी there are some plants are growing properly. So that particular area is called as marsh meadow. Okay. And then finally a scrub area जहाँ पे you can see the shrubs and different plants and different like high plants will start growing, and which will ultimately lead to the climax community. Okay. So the climax community will be like kind of like forest type thing, which is the same thing. So you can see यहाँ पे भी Zehraj में भी ultimately forest बन रहा था, Hydrarch में भी ultimately forest ही बन रहा है. So with the passage of time, basically, even the water body जहाँ पे हमने चालू किया था, that will be converted into land. How? Because there will be different processes of involved. तो वहाँ पे जो pioneer triangle एक से soil formation हो रहा है, soil decomposition हो रहा है, deposition हो रहा है, because of which the water body will be ultimately converted into the typical land-like structure. And this is called as a Hydrarch succession of a plant. Clear? So there are two important succession in the plants, Hydrarch and Zehraj. Zehraj जो होता है वो dry area में होता है, and Hydrarch होता है in the water body like area. Okay, clear? Yes, sir. Great. So I will just take 5 minutes. This is the one last slide. I know 10 o'clock, but just 5 minutes so that हम लोग का chapter खत्म हो जाएगा. And it is very easy thing. So now अभी हमने देखा कि Hydrarch and Zehraj things in a case of plants, like that is the which are examples of a primary succession basically.
So how the secondary succession happens in a particular forest? Let's say कोई जो forest था वहाँ पे आग लग गया था, so now it has to start with the secondary succession, right? So it is something same जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, like which I discussed with the example of the Australia. Same thing now again. So let's say the पहले forest था, forest fire हो गया, there is a severe forest fire and like everything is now gone, there is nothing, but then the soil is still there. Okay, now धीरे धीरे again because the soil is there, some small plants and the herbs will start growing. It will again further get colonized by the shrubs, then the more higher plants like small trees and all, and finally a typical forest community will get established again. You can see stage 1 to stage 8 actually indicates the different stages involved in a secondary succession. Okay, so this particular thing is actually involved. एक बार अगर आग लग गया, so the beginning is set. It depends on now वहाँ का जो soil उसका conditions क्या है, कितना water available है, what are the environmental condition, temperature बहुत ज़्यादा high है, कम है, not favorable है, ये सब के basis पे actually now it will decide कि कैसा start करना है secondary succession. और अगर ये सब conditions favorable है, then it will start the secondary conditions or secondary succession. जहाँ पे some seeds or some propagules will now start growing. So I don't know how many of you see the news yesterday. It was very like good news that the Australia is now using the drones and all to now planting the tree again. तो वो लोग क्या करें with the help of drones, जो वहाँ पे उनके लोकल प्लांट्स थे वहाँ पे वो फॉरेस्ट में, उसके सीड्स वो लोग वापस से डाल रहे हैं वो एरिया में, so that they will start growing again. So this is how they are actually trying to re-establish the forest over there. So this is called as a secondary succession. Okay, and again this will be a faster process, right? Because obviously हम लोग का जो soil तक का stage है वो वैसे के वैसे ही है. We are not affecting the soil at any point, so it will be quite a faster process than the any other primary succession or the process, because soil तो already रहेगा, उसके आगे से अभी now plants will come and they will start growing. Okay, that's why the secondary succession is quite a faster process. So I hope you understood all these things. It is very easy. अगर आपने देखा रहेगा, it is the same thing जो हमने पहले discuss किया था. So if you understood a normal secondary succession, you can write it down in the form of plant also. It's the same thing again. So use it as a like smartly पढ़ो and you will get full marks अगर तुमने properly point wise लिखा तो. Okay, and I hope you understood everything जो मैं